Consumption. Consumption is a process of consuming goods and services to satisfy human wants. अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए जब किसी गुड का कंजम्पशन किया जाता है, जब हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज कंजम्पशन. एंड जो कंज्यूम करता है, द पर्सन हु कंज्यूम, व्हाट ही इज नोन एज अ कंज्यूमर. इसको हम कहते हैं कंज्यूमर. एंड प्रोडक्शन, सेकेंड वन इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. जो भी रॉ मटेरियल हमारे पास में है, रॉ मटेरियल मीन्स like we are having wheat, we are having sugar cane, we are having cotton. So all these things are raw material, and when they are converted into a finished good, means when sugar cane is converted into sugar, when wheat is converted into flour, or when wheat is converted into biscuit or bread, that are the final goods. When means production is a process of transforming raw material into finished goods. We can say when it's a process of transforming farm product जिनका हम प्रोडक्शन फार्म पे करते हैं, farm product to the industrial product. That is, the process is known as production. And the person who produce the things, जो produce करता है उसको क्या कहते हैं? He or she will be known as producer. Next is exchange. Exchange means transfer of goods and services. Transaction of goods and services in an economy with the help of money. So first thing, transaction means transfer of the authority. हमारे पास में कोई चीज़ है, like I am having this pen and you are having money, and I am going to exchange this pen with that money whatever you are having. Then that transaction is known as exchange. Two important things are there in exchange. Then both the person should be ready at the conditions, and the transaction should be done in money only. When the transaction is not done in money, then it is known as it cannot be considered as exchange. Next one is distribution. It shows the income level of different group living in an economy. Distribution shows the distribution means distribution of income. And what it means? It means the different level of the economy. अलग अलग economy के अलग अलग level में जो लोग हैं who are having the different money standard, उनकी income अलग अलग है. On the basis of that we can consider it distribution, and it is one of the important function of the government to maintain the equitable distribution in the economy. एक economy में equal level का distribution of income हो, it is the responsibility of government. Next is investment. What is investment? Investment is a process. Investment actually it's a process of investing, and by this we can increase. It is a process of increasing assets. It is also known as capital investment. Investment, the process of increasing assets. Assets क्या होते हैं? All the things which are used in the production process, they all are known as assets. Okay, so next is all these things. Next is statistics. What is statistics? What do you mean by statistics? Statistics actually it's the science of data. Basically statistics को कहा जाता है science of data. In this, the study of collecting, classification and using statistical facts is study. तो साइंस ऑफ डाटा है मीन्स एवरीथिंग वॉट एवर वी विल स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी इन स्टैटिस्टिक्स दैट इज रिलेटेड टू द डेटा. वॉट एवर इज देयर, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू डाटा. सो डाटा से रिलेटेड सारा कुछ उसमें होता है, इसलिए इसको कहा गया साइंस ऑफ डाटा. एंड और इसमें मतलब इन स्टैटिस्टिक्स वी स्टडी अबाउट द कलेक्शन, classification, organization, all the things which are related there, that all are related to the data. डेटा से रिलेटेड हम हर एक चीज़ पढ़ते हैं. अब स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में डिफाइन किया गया. फर्स्ट इज सिंगुलर सेंस एंड सेकंड इज
plural sense. Some used to say that statistics is a singular thing, singular subject, and some used to say no, it's a plural sense. It is a plural way. So let's study that what it means in singular sense and what it means in plural sense. So in singular sense, statistics studied about singular or individual unit of economy. सिंगल और इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी के बारे में जब पढ़ा जाता है, देन इट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस. स्टैटिस्टिक्स में हम किसी एक के बारे में भी पढ़ सकते हैं और सब के बारे में भी पढ़ सकते हैं. तो जब हम एक के बारे में पढ़ रहे हैं, व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट, लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 11th कॉमर्स only for commerce 11th, so it means we are talking about only one individual unit of the school, and then it is known as statistics in singular sense. अब उसमें अभी हम पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ते हैं कि भाई ठीक है, how many girls are there, how many boys are there, okay. So this is data, information. Data means information के बारे में पढ़ते हैं कि भाई कितने boys हैं, कितने girls हैं, and इस तरीके से जब हम एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, देन इट इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट, व्हेन वी स्टडी अबाउट द मोर देन वन फैक्ट, देन इट इज कंसिडर्ड इन प्लूरल सेंस. इट्स ए स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस. मींस हियर वी कैन टॉक अबाउट ऑल द स्कूल्स ऑफ द कंट्री. एक कंट्री के, या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मोर देन वन मींस स्कूल्स इन पीलीभीत, CBSE schools in Piliphit, ICSE schools in Piliphit, UP board schools are in Piliphit. So on the basis of that we can understand the statistics in plural sense. Next is data. So what is data? Data means quantitative and qualitative facts which are used in economics. Qualitative and quantitative, both the type of facts. As I told you, information or fact, whatever fact is there, that may be qualitative, किस क्वालिटी का है, अच्छा है, बुरा है, बेकार है, मीडियम है, all that type of qualities are there. Or second thing, it is also related to the quantity, किस क्वांटिटी में है, सिंगल इंडिविजुअल है मीन्स या ज़्यादा है. तो all that things we study in data. So that's all in this video, and for remaining topics I am going to send one more video, so wait for that. Till then, watch it.